जय जगन्नाथ जय श्रीराम। तो ओटीटी रो फर्स्ट वीडियो को समस्त वेलकम। जमती कि आज आम डिस्कसन करवा सेल चैप्टर एंड ओटीटी एटा बहुत रोल प्ले कर चैप्टर। ये चैप्टर केवल जो ओटीटी ना बीडी भी जो मैंने प्रिपेरेसन होती अपकमिंग बीडी एग्जाम दौरान से भी दैट इज बेनिफिट हम एंड ऑल्सो जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर होती तो सेल चैप्टर भी वेटेज बहुत रहे। तो आज आम सेल चैप्टर ही ब्रीफली डिस्कसन करवा कौन कौन एमसीक्यू हो पार एंड एमसीक्यू को लेकिन कौन कौन थ्योरी हो पार से रिलेटेड डिस्कसन करवा। चलो समस्ते टिके खाली कंफर्म करो दैट इज ऑडियो एंड वीडियो क्लियर अच्छी देन आम स्टार्ट करवा। अभिप्सा अंकिता रुचिस्मिता जय जगन्नाथ एवरीवन। ओके तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम पाखे अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल। को ऑर्गेनिजम नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल। ये क्वेश्चन आई थिंक काली हमें करथिला एंड ड्यू टू द टेक्निकल इशू वीडियो स्टॉप होइतिला। चलो कौन हम ऑप्शन होची डी राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हम पाखे गोटे लाइन अछि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम माने दुनिया रे एमती कोनोसी लिविंग ऑर्गेनिजम नहीं जे कि बिना सेल रे एग्जिस्ट करथिबो। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। यदि गोटे छोट पिला को पचारे जीवो दैट इज गोटे लिविंग को एंड नॉन लिविंग को केमती तमे डिस्टिंग्विश करिवो व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया टू डिस्टिंग्विश द लिविंग ऑर्गेनिजम फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम। देन छोट पिला भी आंसर दबो दैट इज जदि सेल प्रेजेंट अछि देन हमें ताको कहबा लिविंग एंड इफ द सेल इज एब्सेंट ताको हमें कहबा नॉन लिविंग। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। आमोइबा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा। जेतले हम पढिबा पढिथिबो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हु कैन से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किए देथिले। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को साइंटिस्ट देथिले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आरएच व्हिटेकर। तो अकॉर्डिंग टू आरएच व्हिटेकर फाइव किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एंड एनिमलिया। तो आमोइबाटा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा एंड यूग्लिना also example of protista paramecium भी protista। तो ये माने समस्त लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑब्वियसली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल नॉन ऑफ द अबव। जेहेतु समस्त लिविंग ऑर्गेनिजम एंड समस्त सेल को नेकी तयारी मते को कि yes किरण it is much helpful for your paper 2 also। तो कौन पचारली कि तुम पाए जदी सेकंड क्वेश्चन गोटे पचरा हबो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन is called as the connecting link between plant and animal। that means ये plant भले भी act करि परिबो as well as animal भले भी act करिवो। कौन हो आंसर यूग्लिना। परफेक्ट राइट आंसर इज यूग्लिना। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज एन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यूग्लिना टा कुआ जाय कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल बिकॉज ड्यूरिंग द व्हेन द सनलाइट इज प्रेजेंट जेतोले सनलाइट थिबो यूग्लिनाटा ऑटोट्रोफ भाया काम करिवो। ऑटोट्रोफ हम जानिचे जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती एंड जेतेबेले सनलाइट एब्सेंट थिबो सेतेबेले हेटेरोट्रोफ भाया काम करंती। सो जेहेतु ऑटोट्रोफ होची प्लांट रे कैरेक्टर एंड हेटेरोट्रोफ होची एनिमल रे कैरेक्टर सो ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ बोथ ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफिक कैरेक्टर इट इज कॉल्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कैपेबल ऑफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कैपेबल ऑफ। क्वेश्चन पढ़ो एंड आंसर दियो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कैपेबल ऑफ। कौन आंसर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम। देखो एनसीईआरटी रे तला में गोटे लाइन पढ़िबा स्ट्रिक्टली हमें जानिचे सेल को नेकिरी ऑर्गेनिजम मानन को टू टाइप्स रे डिवाइड करा जाय। गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम बा जो मानकर बॉडी गोटे सेल को नै तयारी एंड आउ टाइप रो ऑर्गेनिजम कहते मल्टी सेलुलर। एज यू नो दैट मल्टी रो मीनिंग होची मोर देन वन। सो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम। बट आमे आउ गोटे कथा लाइन रे मन रखिया पड़िबो जदि गोटे ऑर्गेनिजम सिंगल सेल रे तयारी होबा सत्वे तार इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थाए एंड आल्सो परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जदि सेल प्रेजेंट अछि से गोटे सेल हो किंबा मल्टी सेलुलर हो तो सेल प्रेजेंट अछि माने तार इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अछि एंड आल्सो परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो हियर द आंसर इज नॉन ऑफ दिस अबव। do not capable of none the above because it answer होइतांता unicellular organisms are capable of independent existence and performing of essential function of life। ताहाल आंसर होइतांता सी। जेहेतु पचारछि नॉट कैपेबल तो आंसर होछि डी।
बुझिपार मु कौन कहना चाहूँगी जदि गोटे ऑर्गेनिज्म सेल को लेकिन तैयारी अच्छी लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छी से यूनिसेलुलर हो किंबा मल्टीसेलुलर हो डज नॉट मैटर बट सेल प्रेजेंट अच्छी माने तार इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस अच्छी एंड आल्सो परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ बट क्वेश्चन पचारे कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट कैपेबल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन पे कैपेबल होबनी भूल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस एंड आल्सो परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ रो जहां भी एसेंशियल फंक्शन सेल प्रेजेंट अच्छी माने से करि परियो तो आंसर इज डी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा अच्छा मते को एटी तुमको नै कि तीनटा क्वेश्चन फ्रेम करिया यूनिसेलुलर मोटे एग्जांपल दोची बैक्टीरिया आर unicellular organism na multicellular organism who can say bacteria are unicellular na multicellular को कोन आंसर voice of krishna kiran that is bacteria is an example of unicellular organisms or multicellular organism bacteria ta unicellular na multicellular yes unicellular organism next question जदि पचारिया Protista is an unicellular organism na multicellular organism who can say Protista is unicellular na multicellular Protista is an unicellular organism or multicellular organism who can say not multicellular Lakshmi that is Protista also unicellular and the difference between Monera and bacteria and Protista hoji bacteria hochandi unicellular but तांको सेल रे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नुह एंड प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर बट सेल रे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड so this is the difference between bacteria cell and the protista cells both are unicellular but bacteria cell re nucleus ta well developed no and in protista cell nucleus is well developed this is a silly question lakshmi unicellular eukaryotic abhipsa kiran voice of krishna I hope कि तुम बुझी पारथिबो तो दिस इज द माने मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन हम कहले चलिबो बैक्टीरिया होची यूनिसेलुलर एंड आल्सो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर बट बैक्टीरिया होची यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटिस्टा होची यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक माने हम जानि छे the cell in which the nucleus is not well developed but instead of nucleus there is a structure present called as nucleate ए होची कथा बुझेला आई होप कि तुमको बुझा पड़िथिबो नेक्स्ट जिबा चलो ओके हु वाज द फर्स्ट वन टू सी ए लिविंग सेल देखो सब बेले क्वेश्चन कला बेले दैट इज तमे क्वेश्चन भल से पढ़िबो कि क्वेश्चन पचार छी कोन हु वाज द फर्स्ट वन टू सी ए लिविंग सेल and it is clearly mentioned here living cell so answer कोन हो रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ब्राउन लियोन हक ना none of this above obviously answer is a that is answer is लियोन हक clearly मन रखिबो living cell किए देखितले living cell मन रखिबो लियोन हक हैला एंड जदि एटी नॉन लिविंग सेल थांता नॉन लिविंग सेल ताहले एता आंसर होची रॉबर्ट हुक so don't be confused between the living cell and the non-living cell if the examiner will ask you the non-living cell then directly your answer will be Robert Hooke and if the question is living cell then your answer should be Leeuwenhoek clear living cell देखिथिले Leeuwenhoek and the non-living cell was discovered by Robert Hooke non-living cell discover करथिले and Leeuwenhoek होची living cell मन रहइबो देखो जहाँ भी जहाँ हमर भूल होची इट्स ओके बट एठी हम मन रखिया देखा नॉन लिविंग रॉबर्ट हुक एंड लिविंग लियोनोव ठीक अछि
तो एमती मन रख एल एल दैट मीन्स एल फॉर लिविंग एंड एल फॉर लियोनॉक क्लियर जदि न मन रहिबो रोबोट हुक एंड लियोनॉक भितर कंफ्यूजन आसीबो एग्जाम टाइम रे so you should remember the trick LL that means L for living and L for lionic I hope you understand बुझेला L for living cell and L for lionic then next question एटी पचारिया रॉबर्ट हुक कौन डिस्कवर करथिले हु कैन से रॉबर्ट ब्राउन कौन डिस्कवर करथिले what was the discovered by रॉबर्ट ब्राउन कौन डिस्कवर करथिले that is nucleus right अर्पिता perfect nucleus was discovered by the scientist Robert Brown okay then एठी आ गोटे क्वेश्चन जदि पचारिबा that is राइबोसोम के डिस्कवर करथिले who was the scientist who discovered the राइबोसोम के डिस्कवर करथिले जॉर्ज पालेडे ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन मते को एटी प्रोटीन फैक्टरी ऑफ सेल कहा कुआ जाए प्रोटीन फैक्टरी ऑफ सेल वॉल ना राइबोसोम ना लाइसोसोम कहा को कुआ जाए प्रोटीन फैक्टरी ऑफ सेल हु कैन से प्रोटीन फैक्टरी ऑफ जॉर्ज पालेडे इसीलिए पालेडे पार्टिकल भी बोलते हैं यस राइट राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पालेडे and the protein factory of cell is called as ribosome clear then next question suicidal bag of cell which organelle is called as suicidal bag of cell को organelle को suicidal bag of cell बोली कहा जाए yes right that is lysosome clear lysosome is called as the suicidal bag of cell clear चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु वाज द जर्मन बोटानिस्ट टू स्टडी द डिफरेंट सेल्स फॉर्मिंग प्लांट टिश्यू दैट मींस क्वेश्चन पचारची जर्मन रो बोटानिस्ट किए थिले जे कि प्लांट सेल रिलेटेड स्टडी करथिले बा किए प्लांट सेल डिस्कवर करथिले इनडायरेक्टली क्वेश्चन यही पचारची एंड जे चालाक थिबो से ऑब्वियसली एटी रिलेट करि परिबो क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द बोटानिस्ट सो नियर टू बोटानिस्ट प्लांट सेल डिस्कवर करथिले किए Skeldon, Swan, Rulo Virchow, none of the above. MD Kosser 4D, none of the above. German botanist who discovered the plant cell forming the tissue. And yes, the right answer is Skeldon. Perfect. Matthias Skeldon, full name. The Skeldon discover करथिले plant cell. Clearly मन रखे अछि. एंड प्लांट सेल जेहेतु से जने जर्मन रो बोटानिस्ट थिले एंड स्क्वान थिले कोन दैट इज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थिले जे कि एनिमल सेल डिस्कवर करथिले एनिमल सेल वाज डिस्कवर्ड बाय स्क्वान एंड द प्लांट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय स्केल्डन तो एस प्लांट सेल एनिमल सेल तो दैट इज स्केल्डन डिस्कवर्ड प्लांट सेल and the animal cell was discovered by Swan clear yes that is jane German botanist ye hochi British ro zoologist je ki Swan thile je jane zoologist jehetu se animal cell discover करथिले and ye jehetu botanist plant cell discover करथिले तो आंसर होची Skeldon then एटी जदि हम क्वेश्चन पचारिया रुलो भिर्चो कोन कहिथिले रुलो भिर्चोकर डिस्कवरी कोन थिला बा रुलो भिर्चो को नेकिरी कोन कथा थिला सेल को नेकिरी रुलो भिर्चो आई थिंक आम जब कह सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए करथिले फर्स्ट मते को व्हाट इज द सेल थ्योरी कौन नेक्स्ट क्वेश्चन सेल थ्योरी को किए से साइंटिस्ट सेल थ्योरी देथिले थर्ड क्वेश्चन सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए करथिले मॉडिफाइड बाय फोर्थ वन मॉडिफाई करके कौन देथिले से स्टेटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन को सेल थ्योरी कौन थिला
ओके अंकिता फर्स्ट को कि व्हाट वाज द सेल थ्योरी कौन थिला तापर हमें जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को दैट इज सेल थ्योरी किए डिस्कवर करथिले बा सेल थ्योरी किए देइथिले देन जे सेल थ्योरी को के मॉडिफाई करथिले देन जीवा दैट इज सेल थ्योरी को नेकिरी कौन से स्टेटमेंट आसला मॉडिफाइड को नेकिरी कौन आसीबा दैट इज ऑब्वियसली समस्त आंसर ओमनी सेलुला ई सेलुला तो आमे जो देखिबा सेल थ्योरी थिला कोन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स obviously हम एटा सब जानि छे all the living organisms are composed and product of cells all the living organisms are composed and product of cells थिला cell theory and cell theory किए देइथिले most important cell theory देइथिले स्केल्डन and स्क्वान तो एस both स्केल्डन and स्क्वान देइथिले cell theory then third important कोन that is cell theory को modify करथिले विर्चो जोटा को हमें पढुचे रूल ऑफ विर्चो एंड स्टेटमेंट कौन थिला सेल थ्योरी मॉडिफाई स्टेटमेंट थिला ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्रत्येक सेल ता पूर्व सेल रो तयारी ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल एवरी सेल तार पूर्व सेल रो क्रिएट बोली इट वाज स्टेटेड बाय द साइंटिस्ट रूल ऑफ विर्चो तो क्लियरली मन रखियार अछि सेल थ्योरी कौन थिला all the living organisms are composed and product of cells प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल को नहीं की तैयारी एंड सेल रू तैयारी एंड सेल थ्योरी गिवन बाय किए देइथिले दैट इज हमर स्केल्डन एंड स्क्वान जे जर्मन रो बोटानिस्ट थिले स्केल्डन एंड ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थिले स्क्वान से जण मिसी की सेल थ्योरी देइथिले सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए करथिले मॉडिफाई करे रूल ऑफ विर्चो एंड मॉडिफाई करी कोन कहिदिले कि ऑल द सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल बा प्रत्येक सेल ता पूर्व सेल रो तैयारी क्लियर तो आंसर एटी कोन होबो कि प्लांट सेल देखुतले प्लांट सेल स्केल्टन बट हमें रूल ऑफ विर्चो को नेकरी क्वेश्चन पचाले बुझियला ओके नेक्स्ट दिबा इन व्हिच ईयर Matthias Skeldon examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of plant तो जस्ट ईयर पचारची एंड जो मानकर ईयर मन थिबो आई थिंक ईयर मन थिबो किसी जनकर को ईयर रे दैट इज थिला एमडी कोसर 1838 ना 1938 क्लियरली मन पकाओ 1838 ना 1938 1838 ना 1938 मन पकाओ मैथियस स्केल्डन आई थिंक 1938 I think 1938 answer 1838 1 second let me check plant cell okay 1838 right 1838 and animal cell was 1839 चलो नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर थिबो इन व्हिच ईयर स्क्वान स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल प्रीवियस क्वेश्चन वाज अबाउट द प्लांट सेल एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट एनिमल सेल जेहेतु प्लांट सेल 1838 एंड वाज डिस्कवर्ड बाय स्केल्डन एंड एनिमल सेल 1839 वाज डिस्कवर्ड बाय स्क्वान तो आंसर होची 1839 चलो नेक्स्ट The cell has a thin outer layer which is known as plasma membrane. Who reported this? Cell has a thin outer layer which is known as plasma membrane. किए ताको डिस्कवर करथिले? Cell has a thin outer layer which is known as plasma membrane. Who reported this? That is answer is one. Yes, right. Cell has a thin outer layer अच्छे हमें जानी चाहिए that is called as that was given by Swan. Next question. Cell wall is a unique character of plant cell. Who concluded this? This is the most important question.
जदि आम कहवा सेल वालटा प्लांट सेल देखा जाए ना एनिमल सेल देखा जाए, हु कैन से सेल वाल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। सेल वालटा प्लांट सेल देखा जाए ना एनिमल सेल देखा जाए ना बोथ, हु कैन से सेल वाल plant cell na animal cell na both? Obviously the answer is cell wall is seen in plant cell. And clearly मन रखिबो ब्रिटिश रो जूलोजिस्ट स्क्वान जने कोन थिले, जूलोजिस्ट थिले, स्क्वान जने जूलोजिस्ट थिले एंड आल्सो एनिमल सेल भी डिस्कवर करथिले, बट से ही कहिथिले सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल कहिथिले स्क्वान। तो केबे कंफ्यूजन होबनी, जेहेतु प्लांट सेल कथा आसुची तो मैक्सिमम कंफ्यूजन आसी पारे। प्लांट सेल आसुची माने हमें आखि मुझी की स्केलेटन ही मारिबा, बट क्लियरली मन रखिबो दैट इज सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल स्क्वान ही कहिथिले। जूलोजिस्ट थिले जे एनिमल सेल डिस्कवर करथिले, बट सेल वॉलटा गोटे प्लांट सेल रो यूनिक कैरेक्टर बोली से कहिथिले। तो क्लियर? यस, एमडी कौशर, अभिप्सा, राज महाराणा, ओके, अभिप्सा, निवेदिता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी? आई थिंक ऑब्वियसली वी हैव discussed about it. Who were the two scientists that gave the cell theory? किए जी जन साइंटिस्ट थिले जे कि सेल थ्योरी देथिले? हम ऑलरेडी पढ़िले सेल थ्योरी कोन थिला कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम सेल को नेकी तयारी, कंपोज्ड ऑफ सेल एंड आल्सो प्रोडक्ट ऑफ सेल, बस सेल रू तयारी, सेल को नेकी तयारी, सेल रू तयारी। ऑब्वियसली दैट इज व्हेन द स्पर्म एंड ओवम गेट फ्यूज टुगेदर, देन गोटे यूनिसेलुलर जाइगोट ही फॉर्मेशन हुए, देन जाइगोटा रिपीटेडली डिवीजन करिकरी गोटे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम हुए। तो गोटे सेल रू तयारी हला ना, एंड आम बॉडी रे चुंची मुनर लक्ष लक्ष सेल रही परिवे। सो दैट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल केमती हला, दैट इज सिंगल सेल जाइगोट। जाइगोट रो हम प्रोडक्ट होचे बा सिंगल सेल जाइगोटा माइटोटिक डिवीजन करके मल्टीसेलुलर। तो आंसर इज सेल थ्योरी देथिले बोथ स्केलेटन एंड स्क्वान। तो आंसर इज सी। क्लियर? ओके। The next question, omnicellular e-cellular was given in the year. First मते को ए क्वेश्चन हम पचारिया, अभिप्सा को तमे ओमनीसेलुला ई सेलुला को साइंटिस्ट देथिले? अभिप्सा, निवेदिता, अंकिता, अपर्णा, एमडी कौशर, समस्त आंसर दियो। ओमनीसेलुला ई सेलुला वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट। की साइंटिस्ट थिले जे कि ओमनीसेलुला ई सेलुला देथिले? रुलो विर्चो। यस, परफेक्ट। Rullo Virchow was the scientist who gave that is omnicellular e-cellular. यार meaning होची all cells are arising from pre-existing cell, जोटा हमें ऑलरेडी कहले प्रत्येक सेल ता पूर्व सेल रो क्रिएट हेची एंड आको देइथिले कि दैट इज रुलो विर्चो एंड डेट 1855। क्लियर? 1855 है। तो 1838 रे होचे प्लांट सेल डिस्कवर हेतला, 1839 रे एनिमल सेल, 1855 रे दैट इज सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके ओमनीसेलुलर यूनिसेलुलर देथिले रुलो विर्चो। चलो 1855। क्लियर? चलो नेक्स्ट, what is which of the following surface structure of bacteria does not take part in motility? को surface structure टा बैक्टीरिया रो जे कि मोटिलिटी रे हेल्प करेनी बा जदी बैक्टीरिया को माने मूवमेंट रे हेल्प करेनी। तो क्वेश्चन इज अबाउट मोटिलिटी ऑफ अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रो को स्ट्रक्चर टा बैक्टीरिया को मोटिलिटी रे हेल्प करेनी? आंसर इज फिम्ब्रियाई ना बोथ फिली एंड फिम्ब्रियाई ना कोन ऑफ आंसर? भलसे आंसर दियो, क्वेश्चन पढ़ो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस स्ट्रक्चर of bacteria does not take part in motility? motility रे does not take part in motility, obviously राज महाराणा। आंसर इज डी। यस, देखो जदि हमें देखिया सपोज दिस इज द बैक्टीरिया एंड हमें जानि जे बैक्टीरिया रो सरफेस स्ट्रक्चर एबले बाहर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजेला एंड क्लियरली हमें जानि जे फ्लैजेला होची बैक्टीरिया को मूवमेंट करिया हेल्प करे। फॉर एग्जांपल सपोज इफ द बैक्टीरिया वांट्स टू गो फ्रॉम हियर टू देयर, फ्लैजेला नामक स्ट्रक्चर जे कि बैक्टीरिया को मूव करिबारे हेल्प करे।
मूव करिवार हेल्प करे तो ऑब्वियसली आंसर हे हेबनी एंड पिली जो स्ट्रक्चर रहला पिली रे काम कोन दैट इज इट इज हेल्पफुल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन रे हेल्प करे केमिति सपोज दिस इज द मेल बैक्टीरिया and suppose this is the female bacteria suppose this is the female bacteria and this is the male bacteria तो मेल बैक्टीरिया पाखे पिली थाए जो यही पिली बा जहाँ को हमें सेक्स पिली बोली कहि परिया तो यही पिली देकी ता जेनेटिक मटेरियल ता फीमेल बैक्टीरिया को ट्रांसफर करे सो वी कैन से दैट पिली इज द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया व्हिच इज इंपोर्टेंट फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया ठीक अछि एंड हम जानि जे फिम्ब्रिया रो काम कोन बैक्टीरिया को रॉक रे अटैचमेंट करेबो रॉक माने जदि बैक्टीरिया कोन जगह चिपकी हेकी रहिया को चाहिबो सो रॉक रे अटैचमेंट पाई फिम्ब्रिया तो आंसर कोन बोथ बी एंड सी दैट इज फ्लैजेला इज द सरफेस स्ट्रक्चर व्हिच इज प्ले एन इंपोर्टेंट रोल इन मोटिलिटी तो आंसर इज बोथ बी एंड सी आई होप बुझी पारथियो यस लिपिका राइट चंदन यस चंदन राज महाराणा शशिरेखा निवेदिता अंकिता एमडी कौशर बोथ पिली एंड फिम्ब्रिया तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जाम रे पचारे दैट इज व्हिच इज द surface structure of bacteria the main role of this of that surface structure to for the attachment of bacteria in the rock case रे bacteria को attachment करिया पे को surface structure ता important that is fimbria is the surface structure of bacteria which play important role in the attachment of the rock clear and की bacteria surface structure जोटा कि bacteria को movement रे help करे flagella and pili रो काम कोन for the reproduction बट बैक्टीरिया केस रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जानी एमती नाही कि मेल बैक्टीरिया हैज पेनिस एंड फीमेल वाजाइना देन रिप्रोडक्शन हुए सेमती हुएनी बट सेमानकर प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाए प्रिमिटिव टाइप माने मेल बैक्टीरिया रे पिली थिबो जाहा हम सेक्स पिली बोली कहूचे तो ई पिली देकी तार जेनेटिक मटेरियल ता फीमेल बैक्टीरिया भितर को दैट इज इंजेक्ट करिवो सो दैट हमें कहूचे रिप्रोडक्शन रे हेल्प करे पिली बुझेला नेक्स्ट जीवा which is the elongated tubular structure made up of a special protein on the surface of bacteria cell which is the elongated tubular structure and made up of a special protein on the surface of bacteria cell कौन आंसर OUT के लिए जैसे होता था डेली इवनिंग में एमडी कौशर सर क्लास कंटिन्यू रखे ना प्लीज यस एमडी कौशर we will continue the class for OUT and also for NEET which is the elongated tubular structure made up of special protein on the surface of bacteria cell elongated tubular structure is made up of special protein कौन आंसर को C that is pili tubular made up of special protein pili is made up of protein pillin protein so answer is C next question what is the small bristle like structure of fibers protruding out of the cell small bristle like structure of or fibers sprouting out of cell कौन आंसर दियो that is small bristle like structure or fibers protruding out of the cell fimbriae okay that is sorry fimbriae and what is the function of fimbriae I think now you have an idea about what is the function of fimbriae for the attachment of bacteria in rock माने बा पत्थर पत्थर बैक्टीरिया को attachment रे काम करे fimbriae next question in prokaryotes the ribosome are associated in which structure of cell prokaryotic रे ribosome टा को structure रे associated होती कौन होगा आंसर in prokaryotes the ribosomes are associated in which structure of cell cell wall lysosome mesosome plasma membrane तो कौन होगा आंसर yes the answer is plasma membrane clearly मन रखो okay राइबोसोम को नेकरी एटी तुमको तीन चारटा क्वेश्चन पचारे राइबोसोम को नेकरी फर्स्ट क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक रो राइबोसोम 70s ना 80s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s ना 80s देन यूकैरियोटिक राइबोसोम
सब यूनिट दीटा कौन कौन यूकैरियोटिक राइबोसोम रो सब यूनिट दीटा कौन कौन 50s प्लस 30s ना 60s प्लस 40s देन राइबोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली SF मीन सिंगल मेम्ब्रेन ना डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ना नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन आंसर को तीनटा क्वेश्चन देन 1 2 3 4 प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्या कहुए कौन हम आंसर यस आई थिंक समस्त आंसर आसला आम जाने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम केतेस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70s क्लियरली मन रखिबो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होची 70s यूकैरियोटिक राइबोसोम होची 80s ठीक अछि एस फॉर सेडवर्ग यूनिट नॉट सब यूनिट एस फॉर सेडवर्ग यूनिट ओके तो 70s हला देन 70s रो सब यूनिट कोन कोन 50s प्लस 30s जेतबेले आमे मैथमेटिक्स रे कैलकुलेशन करे इन द मैथमेटिक्स 50 प्लस 30 इक्वल टू 80 बट इन बायोलॉजी 50 प्लस 30 इक्वल टू 70 एंड सेम यूकैरियोटिक रो राइबोसोम होची 80s एंड 80s रो दिटा सब यूनिट होची 60 प्लस 40 राइट so in mathematics 60 plus 40 equal to 100 but in biology 60 plus 40 equal to 80 clear बुझियला then next ribosome ribosome is single membrane ना डबल मेम्ब्रेन ना नॉन मेम्ब्रेन आमे जानि छे सेल भितर जो सब ऑर्गेनेली देखा जाए ताको भितर किछिटा ऑर्गेनेली थांती सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आउ किछ ऑर्गेनेली थांती डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड देयर आर सो मेनी ऑर्गेनेल्स आर देयर which are non membrane bound तो राइबोसोम होची ओटे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्लियर ओके देन प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल का हुआ जाए राइबोसोम को बिकॉज आम जो ट्रांसलेशन जाने व्हाट इज रेप्लिकेशन इन द रेप्लिकेशन डीएनए डुप्लिकेट्स इट्स डीएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन रे डीएनए इज कन्वर्टेड टू एमआरएनए जोतरे कि 3' ରୁ 5' स्ट्रैंड टेप्लेट भलिया काम करे एंड ट्रांसक्रिप्शन करे एंड ट्रांसलेशन रे सेवरल राइबोसोम एमआरएनए लागंती and that is protein synthesis करंती बा amino acid synthesis करंती then protein let it तो एठी जदि हम एक क्वेश्चन पचरा जीवो that is मते को inclusion body is single membrane ना double membrane inclusion body is non membrane double membrane bound organelle सब सेल भितर किए को डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सब सेल भितर किए किए रहिले डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हु कैन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सेल भितर जति सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली रहिले ताको विषय को डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली किए किए सब न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एनएमसी न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट क्लियर न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया नेशनल मेडिकल कमीशन दैट इज एनएमसी न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये तीन जण होछन डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सब किए किए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सब किए किए ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर गोल्गी बॉडी लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी लाइसोसोम एंड वैक्यूल these are the single membrane bound organelle non membrane bound organelle सब किए किए रहले एनआरआई कोटा that is nucleolus ribosome inclusion body and centrosome these are the non membrane bound organelle ras marana endoplasmic reticulum golgi body lysosome vacuole perfect अंकिता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉइस ऑफ कृष्णा लाइसोसोम न्यूक्लियस यस समस्त आंसर ठीक अच्छे तो क्लीयरली मन रखियो सेल भितर किए किए सिंगल मेम्ब्रेन के डबल मेम्ब्रेन के नॉन मेम्ब्रेन ए सब
ओके आउ गोटे एटी क्वेश्चन पचारिया which of the following cell organelle is not under the endomembrane system, not under the endomembrane system लिखुनिया से that is pronunciation ru mark करो which of the following cell organelle is not under the endomembrane system organelle नुह option 1 endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, राइबोसोम को आंक भितर किए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल नुह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नॉट अंडर द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ताले आंसर कोन हबो यस राइट अंकिता विभू किशोर रास महाराणा लिपिका परफेक्ट दैट इज राइबोसोम क्लियर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आंक भितर को कि को स्ट्रक्चर जोटा कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल रो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कोटा भितर हबो मेसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलुअल लाइसोसोम कोटा प्रोकैरियोटिक सेल रो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बा प्रोकैरियोटिक सेल रे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे सेलुअल लाइसोसोम मेसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोटा दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल रे किरण किछि मने रहउनी सर किरण यही सब जिनस टिके पढ़ी आई थिंक मन थिले ही करहब कहीं जेहेतु एटा एमसीक्यू डिस्कशन क्लास ना तो थियोरिटिकली आइडिया जदि टिके थिबो तो बेटर रे क्वेश्चन गुड़ाक इजिली धरी हबो बट जदि थियोरिटिकल आइडिया किछि भी नथिबो ताले इमिडिएटली क्वेश्चन कोन पचारछि जानि परिबोनी काहे कि ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेली को ऑर्गेनेल सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ताको कोन पई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेली कुहा जाय तो टिके थियोरिटिकल नॉलेज थिबा दरकार अपन ना दैट इज आंसर इज मेसोसोम क्लियर मेसोसोम ताले नेक्स्ट क्वेश्चन plastids are found in plastid found in कोठी ना all plant cell ना all animal cell ना euglenoid ना both A and C who can say plastids कौन आंसर plastids yes क्लियरली मन रखिबो प्लास्टिड गुडा कोठी कोठी देखा जाए ऑल प्लांट रे देखा जाए ऑल प्लांट सेल रे एंड यूग्लिनोइड रे भी देखा जिवो यूग्लिनोइड काहे कि हम मन अछि पढितले यूग्लिनोइड होची कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल प्लांट और एनिमल रो कनेक्टिंग लिंक होची कि दैट इज यूग्लिना काहे कि ना यूग्लिनाटा फोटोसिंथेसिस करि परिबो एज वेल एज बा हम कहि पारे ऑटोट्रॉफ भलिया काम करिवो एंड आल्सो हेटेरोट्रॉफ भलिया काम करिवो सो ड्यू टू द डुअल नेचर ऑफ बोथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स यूग्लिना को कहा जाए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल तो आंसर इज ऑल प्लांट सेल यूग्लिनोइड्स द बोथ A and C दिस इज द आंसर हैला इजी क्वेश्चन अछि किछि भी प्रॉब्लम नाही नेक्स्ट दिबा अच्छा मते को कि Plastid is again divided into chloroplast. Plastid रे that is chloroplast, chromoplast, and leucoplast. Question मोर कोन अछि ना आंक भितरु which body important for the photosynthesis among the chloroplast, chromoplast and leucoplast which one is play a important role for the photosynthesis chloroplast chromoplast leucoplast भितर किए that is photosynthesis ପାଇଁ important role play करे yes the right answer is chloroplast perfect then next मते को chloroplast is single membrane ना double membrane bound organelle ना non membrane bound organelle who can say chloroplast is single membrane ना double membrane ना non membrane organelle Abhipsa, Lipika, yes, perfect. That is, as we know that there are three organelle which are double membrane bound organelle: nucleus, mitochondria, and chloroplasts.
सो मो क्वेश्चन भी सेया थिला क्लोरोप्लास्ट को मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ऑब्वियसली दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नेक्स्ट क्वेश्चन among chloroplast chromoplast leucoplast which one plays a important role for the storage of protein carbohydrate and fat आको भितर को प्लास्टिड टा important role अछि जोतरे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट को स्टोर करे पय बा स्टोरिंग बॉडी भलिया काम करे यस राज महाराणा यू आर परफेक्टली राइट कोन हो आंसर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट भितर किए होची प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट स्टोर करिया रे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे कोन आंसर क्रोमोप्लास्ट इज रॉन्ग आंसर अपर्णा आउथरे को शशिरेखा सोनालिसा that is chromoplast not chromoplast अभिप्सा that is leucoplast विभू किशोर परफेक्ट ल्यूकोप्लास्ट मन रखिबो ल्यूकोप्लास्ट रो काम होची कोन ना स्टोरेज बॉडी भलिया काम करे कोन स्टोरेज करे आमे जानि छे टिके मन रखो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट ये होची प्लास्टिड रो प्लास्टिड टा दैट इज कोथरे देखा जाय ना ऑल प्लांट सेल देखा जिवो एनिमल सेल देखा जिवो यूग्लिनाट रे देखा जिवो काहे कि ना यूग्लिनाट होची ओटा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल तो प्लांट रो कैरेक्टर अछि तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट भितरे प्लांट कोन पई फोटोसिंथेसिस करि पारे बिकॉज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल टा बेसिकली कोड देखा जाय इन द क्लोरोप्लास्ट सेल भितरे ओटा क्लोरोप्लास्ट भलिया स्ट्रक्चर देखा जिवो डबल मेम्ब्रेन रो ता भितरे क्लोरोफिल देखा जाय तो ई क्लोरोफिल ही सनलाइट पड़िबो एंड ता क्लोरोफिल टा ही फोटोसिंथेसिस रे हेल्पफुल करे बट स्टोरिंग बॉडी पई बा स्टोरेज पई काम होची ल्यूकोप्लास्ट रो क्लियरली मन रखिबो मते को कि a leucoplast which will store the carbohydrate जो leucoplast कार्बोहाइड्रेट स्टोर करिवो ताको हमें कोन कहबा कार्बोहाइड्रेट स्टोर करिया पई अमाइलोप्लास्ट ना अलेरोप्लास्ट ना इलायोप्लास्ट who can say the leucoplast which is important for the storage of carbohydrate yes right समस्त परफेक्ट अच्छी that is amyloplast perfect and the leucoplast which is responsible for the storage of protein जो leucoplast protein store करे ताको कोन कहै छै who can say the leucoplast which will store the protein called as alleroplast जे protein store करिवो ताको हम alleroplast बोली कहबा and the leucoplast which will store the fat or lipid this is called as elioplast clear Plastid is divided into chloroplast, chromoplast, leucoplast. Chloroplast रो काम होची photosynthesis रे हेल्प करिवो. Chromoplast रो काम होची for the coloring माने fruit रो कलर and leaf रो कलर ई सब कलर पई chromoplast responsible and leucoplast रो काम होची for the storing purpose that means जो leucoplast कार्बोहाइड्रेट स्टोर जिंदा आलू फालू हमें खाउचे खंबो आलू खाउचे ई सब रे कोन कार्बोहाइड्रेट अछि तो बेसिकली आलू खंबो आलू रे अमाइलोप्लास्ट अछि जे कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर जेमते हमें बहुत सारा फैट जतियो नट्स खाउचे जो छेचिकरी तेल बाहर करा होचे सो सेथिरे मोस्टली होची ल्यूकोप्लास्ट थाए सॉरी सेथिरे मोस्टली होची इलायोप्लास्ट थाए जे कि फैट को स्टोर करे ठीक अछि नेक्स्ट दिबा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट द प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑलरेडी आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन प्रीवियस क्वेश्चन सो कोन हबो पिगमेंट को लेके प्लास्टिड को केते बारे डिवाइड कराई छी ऑब्वियसली 3 टाइप क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट की फोटोसिंथेसिस रे क्रोमोप्लास्ट होची फॉर द कलरिंग बा फ्रूट रो कलर लीफ रो कलर या पई होची क्रोमोप्लास्ट रिस्पांसिबल ल्यूकोप्लास्ट होची स्टोरेज पई क्लियर ओके वॉइस ऑफ कृष्णा निवेदिता राज पवित्रा अभिप्सा शशिरेखा बुझी होची ना बुझी होनी जस्ट खाली टिके गोटे सेकंड बुझी होची ना बुझी होनी थियोरेटिकल आइडिया टिके टिके थिले बाकी भल लागिवो थियोरेटिकल आइडिया जदी किछि नथिबो देन प्रॉब्लम होबो स्टोरेज टा टिके आउतरे कोंदु यस देखो दैट इज राज स्टोरेज कोन ना बेसिकली हमें जो पढिले क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तो ल्यूकोप्लास्ट रो काम होची फॉर द स्टोरिंग माने कोन ना ये एमिति टाइप रो प्लास्टिड जे कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करि परिबो प्रोटीन स्टोर करि परिबो फैट स्टोर करि परिबो फॉर एग्जांपल जो ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करिवार कैपेसिटी थिबो ताको हमें कहउचे कोन ना अमाइलोप्लास्ट जेमति कि आलू हो खंबो आलू हो जो तरे कि कोन कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहउची
तो कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग पाई रेस्पोंसिबल होछ अमाइलोप्लास्ट, ये होछ पार्ट ऑफ लिकोप्लास्ट। सेमती दैट इज जदि आमे देखिबा जो माने प्रोटीन स्टोर करिवे, जो लिकोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करिवो ताको आमे कहूचे आलेरोप्लास्ट, आलेरोप्लास्ट, एल ई यू आर ओ, आलेरोप्लास्ट। देन जे फैट और लिपिड स्टोर करिवो that is called as इलायोप्लास्ट। बुझेला? यस सोनालिसा, अंकिता, निवेदिता, ओके चलो नेक्स्ट। Which of the following is a type of plastid? Which of the following is a type of plastid? कि यहाँ भितर टाइप ऑफ प्लास्टिड ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, ऑल ऑफ दिस। कौन अब आंसर? यस आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ दिस क्लियर? अच्छा आत्मघाती थली बा ओडिया रे आत्मघाती थली इंग्लिश रहउची दैट इज सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। किए मते को कि क्वेश्चन टा होची सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। क्वेश्चन सुनो, suicidal bag of cell is a non membrane bound organelle। ठीक ना भूल? suicidal bag of cell जो organelle टा सेटा होचे non membrane bound organelle। ठीक ना भूल? suicidal bag of cell is a non membrane bound organelle। this sentence is true or false? suicidal yes that is हमर रहले कोन दीपिंदर। suicidal bag of cell का कहजे लाइसोसोम। क्लियर? एंड लाइसोसोम टा गोटे सिंगल मेम्ब्रेन ना डबल मेम्ब्रेन ना नॉन मेम्ब्रेन? हु कैन से? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम and vacuole, these are single membrane bound organelle। so non membrane bound organelle statement are wrong। so suicidal bag of cell is called as lysosome and lysosome got a single membrane bound organelle। clear? yes perfect बढ़िया अच्छे perfect। okay next question को select the correct matching। you have to match the column 1 and with the column 2। so type of leucoplast means amyloplast कौन स्टोर करे, इलायो आलेरो कौन करे एंड सेटा जोटा हम प्रीवियसली डिस्कशन कले कौन हबो? that is amyloplast। amyloplast स्टोर करिवो कार्बोहाइड्रेट। yes and then इलायोप्लास्ट will store oil and fat। aleroplast will store protein। then answer कौन हबो? A3 इलायोप्लास्ट that is B1 and C2। so here is option A3 B1 and C2 and option is A3 B1 C2 that is A। clear? चलो तो एटा इजी क्वेश्चन, ए वाला टाइप रो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करले भलो। देन राइबोसोम आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप as the dense particle by which scientist? I have already discussed about this question। I think this question was discovered that is first की second number ही हमको डिस्कशन करथिले कि राइबोसोम आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर एंड को साइंटिस्ट बेसिकली राइबोसोम को डिस्कवर करथिले पचारछि एंड द आंसर इज जॉर्ज पालेडी। परफेक्ट। अच्छा देन मते को कि रॉबर्ट ब्राउन, सेम हमें क्वेश्चन को रिपीट करिया। रॉबर्ट ब्राउन कौन डिस्कवर करथिले? हु कैन से? रॉबर्ट ब्राउन। यस आंसर होची बी। और जदि हमर ऑप्शन को नेके हम एनालिसिस करिया रॉबर्ट ब्राउन कौन डिस्कवर करथिले? हु कैन से? हम जानि छे दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। देन मते को न्यूक्लियस इज ए सिंगल मेम्ब्रेन ना डबल मेम्ब्रेन ना नॉन मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन ना डबल मेम्ब्रेन ना नॉन मेम्ब्रेन? यस आंसर इज डबल मेम्ब्रेन। तापर मते को डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ना ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ दिस। कौन हबो? डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस,
माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ना ऑल ऑफ दिस आंसर कौन हम yes right विष्णु प्रसाद DNA is found in strictly मन रखिबो NMC बा न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एमाने डबल मेम्ब्रेन माउंट ऑर्गेनेली एंड आल्सो सेम निमोनिक्स रे मन रखिबो DNA is present in NMC बा DNA टा न्यूक्लियस रे देखा जिवो माइटोकॉन्ड्रिया देखा जिवो क्लोरोप्लास्ट देखा जिवो and here the answer is all of this okay ठीक अछि then next question that is Camellia golgi what was the discovered by the Camellia golgi कौन डिस्कवर करथिले Camellia golgi yes perfect राज महाराणा Camellia golgi कौन डिस्कवर करथिले 1898 रे Camellia golgi कौन डिस्कवर करथिले हमें जानि छे that is the Golgi complex yes the Golgi complex or the Golgi body was discovered by the scientist Camellia golgi and as for the name of Camellia golgi the organelle name is Golgi body so Camellia golgi होची that is Golgi apparatus discover करथिले रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस सिंगर एंड निकोलसन हु कैन से सिंगर निकोलसन कर कोन स्टेटमेंट थिला बा सिंगर निकोलसन कर कोन डिस्कवरी थिला सिंगर एंड निकोलसन कर कोन डिस्कवरी थिला हु कैन से फ्लूइड मोजाइक मॉडल परफेक्ट फ्लूइड मोजाइक मॉडल थिला सिंगर एंड निकोलसन कर फ्लूइड मोजाइक मॉडल बा जोतरे कि हमर जोटा कि हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर स्टडी करिकरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोटे लिपिड बाइलेयर एंड ता भीतर प्रोटीन गुडा को इंटीग्रल प्रोटीन थाए पेरिफेरल प्रोटीन थाए तो ये सब थिला सिंगर निकोलसन कर फ्लूइड मोजाइक मॉडल नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल दिस क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन हम करि से प्रोकैरियोटिक सेल राइबोसोम केते यूनिट एंड आल्सो यूकैरियोटिक राइबोसोम केते यूनिट कोन आंसर yes protein ice box in a sea of a lipid yes गोटे लिपिड रो समुद्र भितर प्रोटीन टा होची जस्ट लाइक आइस बॉक्स yes eukaryotic ribosome is ATS and what are the two subunits of ATS रो दीटा सबयूनिट कोन एते जोरे वर्षा हैला तथापि गरम लागुचे ना गरम लागु तो ATS रो दीटा सबयूनिट होची 60 plus 40 yes 60s plus 40s 60s होची लार्जर सबयूनिट and 40s होची स्मॉलर सबयूनिट who can say polysome what is polysome बा polyribosome कोन polysome बा polyribosome कोन who can say polysome or polyribosome what is polysome or polyribosome MD Kausar Lipika many ribosome attached to a single mRNA when more than a ribosome that is larger subunity and smaller subunity several ribosome gote larger gote smaller larger smaller larger smaller several ribosome attached to a single mRNA as you know that strand of mRNA is 5' to 3' so mRNA ro strand रे जेतबेले बहुत सारा राइबोसोम अटैच हो जाए ताकू कहा जाए पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम जोटा कि प्रोटीन सिंथेसिस बा ट्रांसलेशन रे हेल्प करे नेक्स्ट बा an elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is collectively known as कोन हबो an elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm network of a filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm कोन हबो साइटोस्केलेटन सिलिया फ्लैजेला ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम elaborate network of filamentous proteinaceous structure आंसर कोन हबो दैट इज साइटोस्केलेटन जेमती आमो मानक बॉडी रे बा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन इन ह्यूमन बॉडी दैट वी आर एबल टू स्टैंड बा हमें एबल टू स्टैंड ठिया कि सो दैट से बड़ा सेल बॉडी भितरे बहुत सारा साइटोस्केलेटन भी थाए एंड आंसर होची साइटोस्केलेटन परफेक्ट नेक्स्ट चलो साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन मेकानिकल सपोर्ट आम बॉडी रे जेमती स्केलेटन टा हमकु जे जहां भी सपोर्टिंग करूची तो जस्ट लाइक सेल बॉडी भितरे साइटोस्केलेटन टा को टाइप रो हेल्प करची सेल को मेकानिकल सपोर्ट टू सेल
providing mobility to cells, maintenance of safe cell, now all of these. Yes, Subhasmita, Vishnu Prasad, Nivedita, that is all of these. Perfect. The answer is all of these. I think it is sorry la question. तो तो जस्ट 2 मिनट खाली गोटे तुमको क्वेश्चन पचारिया तो मु तुमको 4टा सेंटेंस कहूँ से सेंटेंस गुड़ाक ठीक ना भूल मत खाली कह राइबोसोम इज कॉल्ड एज द सुइसाइडल बैकअप सेल स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स राइबोसोम इज कॉल्ड एज द सुइसाइडल बैकअप सेल yes Ankita we will continue this class don't worry false then suicidal backup cell is lysosome then mate kuh that is protein factory of cell is called as lysosome statement is true or false protein factory of Devasmita Devasmita that is ଆମେ already start କଲାଣୁ class 6 ଟାରୁ the protein factory of cell is ribosome okay next question ଯଦି ପଚାରିବା सिंगर निकोलसन को मॉडल केते मसिया रहितला who can say सिंगर एंड निकोलसन को जो मॉडल थिला दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल तो से मॉडलटा को ईयर थिला कार मन अछि 1972 1972 यस परफेक्ट रुचिस्मिता लिपिका अपर्णा परफेक्ट देन मते को नो राज महाराणा अच्छा 1838 मसिया रे प्लांट सेल डिस्कवर हेतिला या एनिमल सेल 1838 रे प्लांट सेल डिस्कवर हेतिला ना एनिमल सेल डिस्कवर हेतिला plant cell yes plant cell then mate ko ki cell wall is a unique character of plant cell it was said by कि basically cell wall टा plant cell रो ଗୋଟେ unique character किए कहथिले skeleton and scan cell wall is a unique character of plant cell किए कहथिले that is scan perfect animal cell was discovered by animal cell की discover करथिले animal cell was discovered by swan then nucleus was discovered by nucleus के discover करथिले swan oh sorry nucleus was discovered by Robert Brown then next that is the extension of plasma membrane is mesosome which is found in prokaryotic cell or eukaryotic cell प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो एक्सटेंशन जो मेसोसोम रहिला मेसोसोम टा प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाए ना यूकैरियोटिक सेल रे मेसोसोम इज सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल yes अपर्णा that is prokaryotic cell the ribosome in prokaryotic cell that is 50s plus 30s or 60s plus 40s the ribosome which is found in the prokaryotic cell is that is 50 plus 30 or 60 plus 40 50 plus 30 then the leucoplast which will store the protein is called as a type of leucoplast which will store the protein is called as amyloplast aleroplast aleoplast a type of leucoplast which will store the protein is aleroplast beauty sahu yes aleroplast perfect then that is the type of leucoplast which will store the lipid or fat is called as type of leucoplast which will store the lipid or fat that is elaioplast yes perfect then that is the cell wall is made up of the lipid bilayer or protein bilayer cell wall is made up of lipid bilayer or protein bilayer cell wall is made up of lipid bilayer okay cell wall of bacteria that is cellulosic in nature or peptidoglycan cell wall of bacteria is made up of bacteria रा cell wall टा कहा को नहीं तैयारी cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan yes cell wall of animal is cellulosic in nature this statement is true or false cell wall of animal cell is cellulosic in nature this statement is true or false true animal cell ro cell wall is absent
so this statement is 100% false. Animal cell যেহেতু cell wall নাই তো cellulose হবার চান্স ହିଁ নাই। The cell wall of algae, the cell wall of algae is cellulosic in nature. This statement is true or false? The cell wall of algae is cellulosic in nature. algae ର cell wall ଟା cellulosic in nature ନା ଠିକ ନା ଭୁଲ? algae ର cell wall, algae not fungi, algae ର cell wall is cellulosic in nature. algae ର cell wall true, yes, the cell wall of algae is cellulosic in nature, but the cell wall of fungi is made up of chitin. फंगीर बा फंगस रो सेल वॉल टा होची काइटिन को नै तयारी, बट द सेल वॉल ऑफ algae बा algae रो सेल वॉल टा होची सेलुलोज को नै तयारी। ठीक अछि, तो एठी हमें क्लास को एंड करिया। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि तुम माने एते कष्ट करी कि टाइप करी कि एते सारा आंसर देइछो। एंड आई होप कि ए क्लास रे तुमको किछि ना किछि शिक्षा को मिलिथिबो। एंड जहाँ भी जहाँ भूल होइछि ताकू तुम मन रखो, किसी प्रॉब्लम नहीं। देन नेक्स्ट क्लास रे अगेन हम एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। देन आई होप कि भल लागिथिबो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शुभस्मिता, एमडी कौशल, राज महाराणा, सोनालिसा, देवस्मिता, यस ओके, अभिप्सा, निवेदिता, चलो तो गुड नाइट। एंड आज मैच को एंजॉय करो। इंडिया इंग्लैंड फाइनल मैच, साउथ अफ्रीका सॉरी इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल मैच, सो एंजॉय करो। नेक्स्ट क्लास रे देखा हबो। एमडी को सर नो सर टाइपिंग में हमें ईस्ट किया है। देवस्मिता नेक्स्ट क्लास रे जॉइन करियो, डोंट वरी, किछ भी नाही, हम नेक्स्ट क्लास करिया। देन लाइव क्लास चलिबो तो सो दैट तुम जॉइन करो। जेतेबेले लाइव क्लास आसीबो विद्यासागर क्लासेस रे यूट्यूब चैनल को तुम सब्सक्राइब कर रखिथा, दैट इज तुम नोटिफिकेशन आसीबो, सो दैट तुम जानि पारिबो। चलो ससरेका अपर्णा, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। हाँ हाँ, यहाँ तुम पेपर 2 देवस्मिता तुम पेपर 2 हब है। चलो।